In the run-up to election 2014, mudslinging has been on at full throttle by political parties. Ram Manohar Lohia calling Indira Gandhi Gungi Gudiya way back in 1966. और दिग्विजय सिंह calling the BJP नचनियों की party. The war of words have continued. And more aggressively so resorting to personal attacks. We have compiled a list of the most outrageous barbs by politicians, and here they are. First comes the king of oratory skills, Modi, who enlightened us with the ABCD of Congress, and he said, A for Adarsh scam, B for Bofors, C for CWG and Colgate, D for दामाद का कारोबार। भाई ऐसा है तो मैं भी बन जाऊं कांग्रेस का दामाद। कांग्रेस का ना सत्यवचन। Salman Khurshid's recent remark on Modi has had the entire media, public and for obvious reasons BJP in total frenzy. He said, "We don't accuse you of killing people. हमारा आरोप ये है कि तुम नपुंसक हो." नपुंसक as in impotent, referring to of course Modi. कहीं पर्सनल अनुभव तो नहीं? अब पर्सनल अनुभव है कि नहीं है ये तो खुर्शीद और मोदी ही बता पाएंगे. And here comes the drama queen of politics. Oops, sorry, the drama king of politics. And he said, I'm not a terrorist. Modi should have met me when Modi denied him an appointment during his Gujarat tour. अरविंद केजरीवाल, इनका मैं क्या बोलूं? नाम ही है AK-47. डर तो लगेगा भाई. बिल्कुल. And the way he is behaving these days, it should rather be I am Crazyval and I am not a terrorist. Now this guy is my favorite stand-up comedian. You didn't get it? Okay, a hint. He's the Amul baby. Yes, Rahul Gandhi. Who else? Now he says, people call us an elephant. We are not an elephant. We are a beehive. Which is more powerful, an elephant or a beehive? सत्यवचन. बिल्कुल सत्यवचन है ये. मधुमक्खी का छत्ता ही तो है. उनकी क्वीन बी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं बाकी सब. और अगर राघव देखा जाए तो मधुमक्खी का छत्ता अगर हो then the bees can fly in different directions to spread corruption. Elephant can only trample in his own area. तो फिर Now actually Rahul is a favorite. We couldn't choose just one, so we have 3 quotes of him. Now the second one is, Dalit community needs the escape velocity of Jupiter to achieve success. मुझे तो लगता है कि RG उर्फ राहुल गांधी को ही जुपिटर बने. I think that will be very helpful for the country. बहुत अच्छी charity हो जाएगी कांग्रेस की तरफ से. Now the third quote is, politics is everywhere, in your shirt, in your pants, everywhere. उनके पैंट में तो क्या है मुझे पता नहीं, पर सत्यवचन. Now this one I know will be an ROSL moment. This is what actress Munmun Sen said when she was asked of her campaign strategy, who's been fielded by Trinamool from Bankura district. She said, it's very difficult to look glamorous in summer, but I'll see what I can do. कितनी बड़ी दिलवाली है हमारी मुनमुन सेन. देखिए अपने लोगों के लिए धूप में भी घूम रही है. पर राघव मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तृणमूल कांग्रेस वालों ने ममता बनर्जी ने बताया है कि उन्हें नहीं, कि फिल्म की प्रमोशन नहीं, वो कैंपेन स्ट्रेटेजी के लिए जा रही हैं. तो ये तो फिल्म जैसा ही तो है. सच में ये एक्चुअली पॉलिटिक्स इज एज एंटरटेनिंग एज फिल्म्स, राइट. Shahzada's mother, that's Madam Sonia Gandhi, too has often come up with her own filmy rhetoric. After 2007 Babet Modi, Maut Ka Saudagar, this was the more recent one. She said, do not support those who indulge in जहर की खेती. तो किसको सपोर्ट करें? भ्रष्टाचार की खेती को? झाड़ू की खेती को सपोर्ट कर सकते हैं. Now here comes another attack on Modi by Madam's gang, and this was Manishankar Ayyar at the recent Congress conclave in New Delhi, and he said there is no way that Narendra Modi can be the Prime Minister in the 21st century, but if he wants, we can make some room for him to come here and distribute tea. कितने दयालु इंसान, बड़े दिल वाले. हमारे लिए भी थोड़ा रूम बना दीजिए इस भ्रष्टाचार फ्री कंट्री में. क्या अब कौन सी सेंचुरी में, 21st सेंचुरी आगे आने वाली कौन सी सेंचुरी में भ्रष्टाचार खत्म होगा ये तो हम नहीं जानते, पर वक्त ही बताएगा who sells tea and who sells biscuits. Okay गीतांजलि, enough of seriously random. तो आप चाय वाय पिलाइए, जाइए चाय बनाइए. You're the Modi fan here. You should be serving me tea. I think you'll be an expert at it. Okay, so you are the आप supporter. आप झाड़ू निकालिए और घर को साफ करिए. झाड़ू से लॉकर ना हम आपको पीठ ही देंगे. हम आपको पिलाएंगे अपने नमक वाली चाय स्पेशल. नमक वाली चाय हम आपको उसमें गरम मसाला डाल के पिला देंगे. हम आपको रेलगाड़ी में